Hi, Miglani. How are you today? I'm good. I'm good. I'm a bit stressed out, I must say. Are you feeling the heat from the London airport? I think so. I'm not feeling the heat, but you know what? I have a lot of friends Okay, who are supposed to fly today or tomorrow, okay. either on work or but and there's this huge fire. Hmm. So I don't know if people who are watching right now. I mean, if you're watching later, you'll probably come to know. But today there was this huge fire in London Airport, Heathrow Airport, Yes, and everything is gone. And I think they've shut out all the flights at least for the next 24 hours. yes. Uh, 1,300 flights. That's a large number, like it's 1,300 it's flights. like there are some people saying that they've got messages from the airline that your next flight will be 7 days later. Mm. Now, maybe that's the inside information, but also sometimes airlines play it safe and Yes. give a slightly longer date. Oh, I heard that the counter-terrorism police in London is looking into this. Do you think it's a terrorist Yeah. attack? I think that's so. See, the way I see it, a fire this huge at an airport this important, one of the Yes. top three airports in the world by air traffic. Yes. If a fire of this scale breaks out, there can only be three things. One Yes. is obviously incompetence slash negligence. Hmm. Number two is some hanky panky, someone playing dirty. And number three is what I call none of the above, but we'll come to that later. So hanky panky में see negligence, incompetence हो सकता है, who knows, किसको पता है, कुछ भी Yeah. हो सकता Yeah, but है, there right? are always fail-safe mechanisms. Even if there is a fire, there's always a fail-safe mechanism. Like multiple fail-safe mechanisms have to fail for fire this big to happen. So Exactly, and for something as important as a Heathrow Airport, yes, absolutely. There's so many fail-safe mechanisms. I mean, there are enough people, checks and balances that it's yes, unlikely to happen. However, uh, like you said, I think you said in a previous episode, don't blame uh, on this what you can blame on incompetence, yes, something like that. तूने ही yes, बोला था तो मैं उसको पकड़ रहा हूँ. There is a level of incompetence that is always possible. There's a level of negligence, but yes. जो तूने बोला, I'm hearing more and more in the last 1 hour Hmm. is uh, the counter-terrorism department has taken the lead in the investigation. What does Yes, that mean? Number one, see, by law, and English law, British law is not that different from Indian law or for law from eh, all these agencies. They have a priority. Who will take the lead in a particular investigation? Anything to do with fire has to do with the London Fire Agency, yeah, London Fire Service, and that is what legally they started. But right now, the lead investigating agency is counterterrorism. What does that tell you and me? The official story I'm still hearing on BBC is no, we don't suspect it, but we are just keeping all ends that's covered yeah, and all that. And but कुछ तो है boss, दाल में कुछ तो yeah. काला है. Yes, agreed, agreed. 100% agreed. देखो, incompetency can explain most events instead of bad intent, but incompetent people only do small things. Incompetent people usually cannot cause this big of a fire. So, उसका ना मैं एक और चीज बोलूंगा. एक ना 200 साल पहले लंदन में फायर हुई थी. hmm, It's like the called the Great London Fire. hmm, And I don't know if any of our viewers know it. I don't know if you've heard of it. I hadn't heard of it till a few years ago. Not because I'm staying in London, but basically it is part of the primary curriculum in schools in England to sure. teach the kids about the Great London Fire. Hmm. Hmm. You know, like in CBSE, Indian education, we had to read about class 5 में ये वाली history, class 6 में ये वाली Yeah. history इस type से होता है. So my kids also hear about Great London Fire in class 2. उनके syllabus में है. Hmm. And that happened. And there's someone called Samuel Pepys. Okay. Pepys is spelt, by the way, is Pepys. Okay. Interesting. If you can pronounce it as Peeps, then what to Uh-huh. you? मेरे को तो एक साल लग गया था उसको Peeps बोलने में instead of Peppy.
Hmm. whatever. But that guy is like Great London Fire on one side and Samuel Pepys on the other side. मैंने सीखा है अपने दोनों बच्चों के साथ। एक ने Hmm. सीखा मेरे पर, दूसरे वाले के सामने मैं भी शाना हो गया कि यार हाँ यार मेरे को भी पता है सैमुअल पेप्स। No. Yeah, but sorry, coming back to the point, obviously, I mean, London has had a history of fires, and supposedly 200 years later, apparently the Great London Fire of that time was incompetence or negligence. Yes. Or Yes. that started, and possibly this Heathrow fire today is that, but we will see. I mean, the amount of, you have to realize one thing. Heathrow is, in a way, as we see the world, it's in the center. So, global commerce. Where Yes. do flights land? Even flights from somewhere in Asia, somewhere to America, they Yes. through either Middle East or Heathrow. The Yes. reason Heathrow is one of the biggest airports is because of that. And Heathrow having to cancel every flight without exception, Yes. or at least 24, 36 hours, Yes. counting, that has to be big. Yes. It's very big, no doubt. But Yeah. the good Anyways, news, we will the catch the good news story. is I will. I'm keeping my fingers crossed that it is just negligence, and yes, negligence is easier to correct. yes. But the good news is there are no lives lost. That's the good news, and Hmm. hopefully everybody will be safe. You know. Yeah, yeah, yeah. Let's be positive. I mean, we'll keep the Heathrow story. I'll keep track because it's in my neighborhood in a way. It's Yeah. like 8 miles from my place. But Wow. what is what's the biggest excitement in your life, Vix? The biggest excitement in my life is that my city, Calcutta, KKR, will play Bangalore's team tomorrow in the IPL opening game. So So your city, Calcutta, not your city of I am Bangalore. Shame on you, Vic. Shame on you. yeah, yeah. Shame on But you. there's something to be said about where you were born, right? There's something to be said about where you were born and where you Yeah. spent the first 18 years of your life in Calcutta. And Calcutta is a very beautiful city. For those who have not visited, I would say go visit Calcutta for a week and understand. Calcutta taught me that the poorest person can be happier than the richest person in this world, and nothing exemplifies that more than in Calcutta. It's a very, very beautiful city. You see people just being content with what they have, people being happy with music, with nature. So that city has a lot of, and the game is at Eden Gardens. That is the first cricket stadium that I ever visited with my family. My dad took me there, so a lot of fond memories, and uh, and I have put my money on KKR this year. So I know that you're going to be making at least six figures by the time IPL ends. What is your which is your favorite team to win? See, I don't have a favorite team, but I'll tell you this. I'm taking a step back. Firstly, I'm very excited IPL is happening this year. Like every year. I'm very excited. कल शुरू हो रहा है IPL, so yes. वो व्हाट इज दैट, वो आई थिंक वो जियो चैनल पे वो एक वो ट्यून आती है ना, पे 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 पे, लाइक दैट्स व्हाट दे डू. सो uh, इट्स प्लेइंग इन माय माइंड फॉर द लास्ट 2 or 3 weeks. पे 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 uh, पे आईपीएल शुरू हो रहा है. सो uh, दैट्स वन. uh, But more than that, I mean, it took me back to not just the Champions Trophy just now. It took me back to the previous T20 World Cup that we won. sure. And then I was thinking कि इस बार कौन करेगा. Hmm. और आई नो हम सब भूल गए हैं, बट एक वो आईपीएल ऑक्शन हुआ था, इफ यू Uh, रिमेम्बर. ऋषभ पंत लास्ट ईयर उसका कमबैक था, uh, and he went for a big amount. Shreyas Iyer, big uh, amount again. I think he was, if I'm not mistaken, Shreyas Iyer was the highest paid. I think 27 crores or something like that. So these are the big guns, and I definitely want to watch pretty much every game. Um, hmm. but see, let's be honest. Number one, there are games on the weekdays.
Yes. The problem is for most people in any country of the world, games on weekdays are very difficult to watch. If I Yes. were in India, then क्योंकि India में because they do the weekday games in the evenings, it's great, Yes. right? But in the UK and for you in the, I think it's easier for you in the West Coast if you were to watch it. But for me in the UK, the evening India games are in midday. They're at like सुबह 11-12 बजे, which is like the peak of my work day. So बहुत difficult Yeah. होता है, but like they say, Crick Info Zindabad. I will Yeah. definitely keep track of the scores. And there's one more thing. I am going to play for the first time in my life a Dream Hmm. 11 Fantasy IPL. Acha, so tell us more about the Dream 11 Fantasy IPL. Explain that to the यार viewers who मैं don't मैं know मैं about भी it. अभी सीख रहा हूँ. So I'll be honest, हाँ. मैं अभी सीख रहा हूँ. मैंने अभी अकाउंट बनाया है और मैं अपनी टीम बना रहा था. अच्छा, Dream 11 It's में not तुमने free. अकाउंट बना ली? And which of the 11 players have you chosen? हाँ, तो वो मैं अब बना रहा हूँ फर्स्टली. अभी फाइनल हाँ. नहीं हुआ है. आज आज रात को फाइनल करना है. Okay. बट अगर मैंने तुम्हें बता दिया फिर तुम भी वही कॉपी कर लोगे ना. हाँ, तो मैं नहीं हाँ, बताऊंगा. बट एनीवे, हाँ. जोक्स अपार्ट, सी द थिंग इज कि आई मीन इट्स जस्ट अ वे टू गेट बी कनेक्टेड टू द गेम. I mean, Yes. I don't see this as like the biggest thing that I will win. That वो आजकल क्या बोल रहे हैं वो 10 करोड़ का इनाम ले लो और if हाँ. you have the biggest team or something like that. You know, that's what Yes. I saw about Dream 11. Nothing is free. Yeah. So I've been playing fantasy EPL or English Premier League in football for like the Yeah. last decade or so. Yeah. It's free. It is free. Yeah. Yeah. And maybe I'm comparing apples and oranges क्योंकि I'm comparing Dream 11 to Fantasy EPL. I know कि जो BCCI या इनकी जो IPL की जो ऑफिशियल फैंटेसी है लीग, which also I have an Yeah. account, I'll see. uh, वो तो फ्री है. हाँ. बट दिस इज द फर्स्ट ईयर मैं ड्रीम 11 ट्राई कर रहा हूँ. आई विल टेल यू नेक्स्ट नेक्स्ट वीक कि क्या हुआ. एंड डेफिनेटली मेरी टीम में बैंगलोर के थोड़े से ज्यादा लोग हैं देन योर कैलकाटा. हाँ. हाँ. So कैलकाटा for में कौन viewers है? कैलकाटा में हु आर द प्लेयर्स यू आर सपोर्टिंग इन कैलकाटा? यार मैं तो और अपने कैप्टन को केकेआर, सपोर्ट कर रहा कोलकाता हूँ. नाइट हाँ. राइडर्स. हाँ. मैं तो रहाणे को सपोर्ट कर रहा हूँ. मैंने वही है जो इस बार जिताएगा केकेआर को. एंड but for those who don't know, so in Dream 11 you basically create an account and you choose around 8 players in your team. और जैसे जैसे वो मैचेस में परफॉर्म करते हैं, that's how you get more and more points. So if you choose the best 8 players, which I think I'll choose better than Miglani, so I might have more points by the time the games end. And IPL lasts for around 2 months. मैंने 2 महीने last करता है. The final is in May 25th. So it's like a big tournament. It's not like it finishes in 2 weeks, you know. So it's a big देख से tournament. काम करते हैं, एक Hmm. काम करते हैं कि अब you have challenged me and you have challenged everyone around who is even Uh, listening to this. So let's do uh, this one thing, that uh, every week we will spend 5 minutes on uh. Fridays to compare our scores क्यों on the Dream बिगलानी यार, 11 क्या बिगलानी Premier यार, League. तुम इतनी बुरी तरह से हारोगे तुम. इतनी बुरी Let's तरह do से it. Let's हारोगे. do it. मेरे को But and I will and I will go see two is मेरे to को one. हारने से डर नहीं है क्योंकि आप Uh, वो अभी वो कौन सा बाजीगर का है या किसका डायलॉग है कि वो कैसे जीता जिसको हारने से डर हो टाइप्स. हाँ हाँ. ये पूरा मेरे को पूरा हारने से डायलॉग डर बहुत नहीं है. ज्यादा. मेरे को हाँ. खेलने का शौक है. हम्म. तो हम्म. एक काम करते हैं एंड सी whoever is watching this, whenever you're watching this, whether it's live today or whether it's in the next few days or few weeks, share your scores हम्म. and let's see, maybe we can create an IM ke baad Dream 11 subgroup and see Yes. how we compare with each other. Who Let's wins the do that. Dream 11? Who is able to Yeah, pick the best players? Because see, that's a big talent, right? Because if you can consistently show that you're picking the best players, then you should be the one buying players at the end of the season for the next season. You know? exactly. I, Yeah. I think that's how it works. That's how it works. That reminds me of Gran Turismo. So Yes. there's this PlayStation game Gran Turismo, and they picked up an actual team based on people who were able to play Gran Turismo well. So they
picked a Formula One type of racing team back there, and they even now made a movie out of it called Gran Turismo. So the movie is great. The game is probably one of my all-time top three PlayStation games ever. Yes, Uh, yes, so yeah, that's it. But Vix, yes. मेरे को इससे The एक other चीज याद आ person रही that है. the other person I'm planning to watch is Rinku Singh. If you remember, he's a good middle order batsman. So and हाँ, a वो काफी good काफी छक्के मारता है वो बेसिकली. काफी छक्के मारता है. हाँ, तो हाँ. So that's this. But एक चीज बताओ. See, we were talking hmm, about IPL, we are talking about Gran Turismo, we are talking about all these performance things. hmm, I think the biggest performance and जिसके लिए सबसे ज्यादा physical fitness as well as mental fitness देखी जाती है is uh, going into space. yes, yes. And that I reminds think me, what you're is your referring to view? Sunita. हमारी लड़की वापस आ गई. हाँ, हमारी लड़की वापस आ गई सेफ एंड साउंड. एंड इफ यू हैव सीन, जब वो स्पेस में थी तो इंडियन लड़कियां लंबे बाल रखती है तो हर हेयर्स वर फ्लाइंग इन द एयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी. एंड आई Yeah, फाउंड दैट टू बी वेरी फनी. yeah, So yeah. Sunita is has a very interesting upbringing. Though she was born in the U.S., she was born to an Indian father and a Slovenian mother, Slovenian American mother. So, and I think we take full credit for any Indian blood that achieves anything. So it's a very good news that Sunita visited the space station. Though she was going to be there only for 8 days, she ended up being there for 9 months. And people are blaming Biden's incompetency. Uh, so people are saying कि I mean, think Biden about का it. यार आप कहीं पर 8 दिन जाओ और 9 महीने में तो बच्चा हो जाता है यार. हाँ, नहीं बहुत बड़ी बात होती है यार बिकॉज बच्चे हैं, परिवार है, हस्बैंड है. आप सबको बोल के गए हो आई एम गॉन फॉर 2 weeks और 8 days आई बी बैक एंड you have plans and everything, and then you go and you're gone for 9 months, and you're 9 months in space where your body may not be used, but you haven't done that kind of training to survive for 9 months in space. Like when she splashed down, she wasn't able to stand up. Yeah. Because I think 9 months when you are in lack of gravity, suddenly when you come splash down, the gravity is too much for you. And I think also I'm so space. glad कि finally वापस आ गए. But what हाँ, some of this was played out even in your elections, the Biden-Trump elections, जिसमें yes, Trump बोल रहा था. And sometimes one felt, as in I definitely felt कि ये थोड़ा सा हाइपर बोल हो रहा है कि बाइडेन तुमने उनको बुलाया भी नहीं. when हाँ, and I think Musk also said that I was ready to bring them back but they didn't allow me to bring them back. ऐसा कुछ था. yes. हाँ, नहीं ऐसा था. मैंने Musk did offer कि I can bring them back, but obviously by that time Musk was already supporting Trump, and Biden did not want Musk to get the front page of the news. So a lot of things that politicians in America do, they do thinking, "Acha, what will be on the front page of the news tomorrow if this event happens?" The politicians And everywhere do that, and it is, let's be honest, it's their job, right? yes, That's yes, how at they the are end of the day, supposed it's to their job. perform. Yes, yes, But this is like absolutely horrific that just because someone else will get the credit, that you don't you keep people for 9 months in space instead of 8 days. ये तो yes. बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया. एंड आई एम रियली शॉक्ड कि जिस प्रकार से अब सुनने में आ रहा है दैट बाइडेन वाज़न्ट इवन साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स एनीमोर, एंड ही डिडंट इवन नो द डॉक्यूमेंट्स दैट वर बीइंग साइन्ड विद हिज नेम. Literally, it was an auto pen. It was a machine that put Biden's signature on documents. And the Speaker of the House, he asked Biden that, "Acha, why did you close these ports in Louisiana by an executive order?" He said, "Which ports? I haven't closed any ports in Louisiana with executive order." Because he didn't even know what was being signed. So I have two So thoughts on that, what you just said. yeah, One is कि ये तो सबको पता है यार कि बाइडेन दद्दू थोड़ा सा सठिया हुआ है. हाँ, नहीं थोड़ा राइट. नहीं, मैंने I don't think कि एक एक उम्र के बाद सब लोग होते हैं, तू भी होएगा मैं भी होऊंगा, दैट्स फाइन. हाँ, हाँ, बट द पॉइंट इज ही वाज अ प्रेसिडेंट एंड उसने साइन अगर नहीं किया तो किसने किया, दैट्स अ क्वेश्चन. इज नो वन आस्किंग दैट क्वेश्चन?
नहीं तो कि किसने दे साइन एक्चुअली किया? शोड द मशीन, उन्होंने मशीन दिखाई व्हाइट हाउस में, वो मैंने लिटरली एक जैसी लैंप होती है ना वैसे लैंप सी मशीन है, और वो मैंने बस उस मशीन के नीचे कागज रखते थे और वो मशीन साइन कर देती थी. And that worries me a lot, Miglani. I think I'm very angry that the नहीं, president लेकिन ये जो himself was ऑटो not साइन signing the वाली जो document. बात जो ट्रम्प कर रहा है एंड ऑल दैट गोइंग ऑन, वो तो ट्रम्प ने भी करी है, ऐसे ऑटो साइन, डॉक्यू साइन. हम भी करते हैं डॉक्यू साइन. नहीं नहीं, मतलब हम सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स पे करते हम हैं. डॉक्यू साइन नहीं, करते हैं. व्हाट्स डिफरेंट हियर? हम but we read the documents before signing it, right? It's not that बट you're कैन यू प्रूव कि उसने नहीं पढ़े? yeah, because the Speaker of the House, Johnson, he says that he asked Biden that how could you close these gas terminals in Louisiana, and he said like, no, I've not closed them. Why are you saying I've closed them? He said you signed a document. So so बट that बट indicates. सोच कि isn't that sounding like he said she said कि स्पीकर ने बोला कि उसने मेरे को बोला. No, no, but Biden did not come out, and Biden did not say that Johnson is lying. Agar Johnson झूठ बोल रहा होता, तो Biden would have come out and said he's lying. Biden has बट kept वो तो quiet हमें पता throughout. है, वो सठियाए दद्दू है. यार बॉस, सठियाया हुआ दद्दू एंड गॉन दद्दू में फर्क होता है. I don't think he's there in his brain anymore. He's gone. I still remember the debate with Trump where he said, yes, I have killed Medicare. That was his exact sentence. And the Medicare is the health insurance for anyone above the age of 65 in the US. And the guy said, I've killed Medicare. There's another sentence where he says something nobody understands. And I think one of the reasons this won Trump the presidency, Trump looks at him and says, I don't understand what you said, and I don't think even you know what you said, and and that I think that won him the presidency, or at least that got Biden out of the race. So I think ये एक बहुत बड़ी sociological study है मिगलानी, कि how he was able to stay president for 4 years and how he was so close to winning presidency again. So it has to be said that the bureaucracy or the machine has a lot of power where they can keep a mentally not competent person as the president for 4 years and also run him again. All he needed to do was to survive that debate, and he might have won the presidency again. So, quite a sad state on how humans are Yeah. willing to give up their तो इसका agency. क्या होगा? I mean, let's say, assume hypothetically, बट हाइपोथेटिकली उसने इतने सारे लोगों को वो दे दिया ना, ही इज लाइक लेट देम ऑफ द हुक. व्हाट्स इट Pardon, कॉल्ड yeah, इन yeah, अमेरिका? pardon. It's like He's given the pardon, pardon. So yes. has he given the pardon or has someone else signed on his behalf? I think Because those documents I were not think I signed heard by him. somewhere कि ट्रम्प ने बोला है कि उसने तो Yes, साइन ही नहीं किया, हम इसको खारिज कर रहे हैं. That sort of yes. thing. Yes. So what they've been able to show is, let's see, when humans sign, maybe signature one and signature two will have some differences. But when a machine signs, those signatures will be exact copy of each other. And what अच्छा, they've been ऐसा able है. to show that all the pardon documents have the वो कॉपी exact पेस्ट है, signature. कॉपी पेस्ट. वो Copy जिसको paste. बोलते हैं कि यार मेरे को याद आ रहा है कि बोलते हैं कि नकल में भी अकल लगानी चाहिए. नकल में भी अकल लगानी चाहिए, तो उन्होंने नकल में भी अकल नहीं लगाई. लिटरली वो मशीन ने एक पेन पकड़ा है और मशीन ने सिग्नेचर लगाया है, एंड ऑल वाओ. सिग्नेचर्स आर एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी. बट यू थिंक दे कैन प्रूव इट? यार ये ना कुछ साल केस चलेगा. हाँ नहीं आई देखो, थिंक ये केस ऑब्वियसली. चलते जाएगा और कुछ नहीं हाँ होने वाला है. ये हाँ बहुत ही नहीं हाई लेवल टाइप के केस हैं जिसका यस. कुछ नहीं होता है. Yes, and I would देखो, in my own ways, people I know, and I always say, see, it's better to let go of these and move on. I mean, you don't want to get dragged with another Supreme Court case with the auto pen signatures where the president did not know or may not have known is that valid or not valid. You just want to move on. You want to focus on progress because litigation doesn't get anyone anywhere. पर कई बार बात हद तक भी गुजर जाती है और कुछ बातें तो हद तक गुजरी हैं. आई थिंक ऑन दैट नोट हमारे मूव ऑन में that is a nice segue because you were talking about Trump and we were talking about Sunita Williams. यस. तो हमारी एक और
जिसको हम बोलते हैं इंडिया की लड़की, बट शी इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू इंडिया एक्सेप्ट in The some Hindu religion. symbolic Hindu Yes. way called Tulsi Gabbard. She actually हाँ. came to India. Hmm. And I think 3-4 दिन पहले ही अभी इंडिया से वापस गई है. Yes. Yes. So अमेरिका में So उसकी खबर है या नहीं है? हाँ नहीं, अमेरिका में खबर है, तुलसी इज वेरी वेल लाइक्ड. She speaks her mind, and it is so good to see people who speak their mind. Because for the last 4 years we had a presidency which was not speaking, right? So it's good to see people who speak their mind. Tulsi Gabbard was the person who led the initiative to release all the 80,000 pages of the JFK, John F. Kennedy's assassination, that got released. I have looked at some हाँ, of those उसके उसके बारे documents. में भी कभी हम बात करेंगे, क्योंकि हाँ. वो 80,000 पेजेस में पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ यार. इतना तो मैं मतलब वही. स्कूल में पढ़ लिया हाँ. होता तो बात ही क्या थी. नहीं, uh, I think, obviously I'm only referring to pages that others are pointing out that these are the critical pages, and then I'm या reading them. Uh, but what is interesting is that those pages reveal that CIA was running its own foreign policy other than the president of the country. बट But CIA, डज इट रियली रिवील दैट? I think so. I think what I read, it seems to indicate that it was running its own foreign policy, uh, and it seems to indicate that, uh, it seems to indicate the presence of deep state. It seems to indicate that, uh, it seems to indicate that, uh, at least after reading those documents, I'm more certain that JFK assassination was encouraged by CIA. If not done by CIA, it was encouraged by CIA. If they wanted to stop it, they could have stopped it, because this Oswald guy, he was under continuous surveillance of CIA for over a year. So you have this guy under surveillance. He is within the vicinity of the president and is able to fire a shot. That doesn't happen if CIA did not want it to happen. So very यार आई disappointed नो that दिस it was. माइट साउंड लाइक अ मूवी, बट वो जब आप किसी को सर्वेलेंस करते हो एट सम पॉइंट आप उसको ये भी बोल देते हो कि बेटा ये कर दे, हाँ, फिर तेरी हाँ. फैमिली को हम ठीक रखेंगे. Yes. ऐसे मूवीज में Yes. होता है. आई डोंट नो वेदर दैट Yes. रियली हैपेंड और नॉट, हाँ, बट ऐसा हाँ, हो हाँ, सकता है कि हाँ. किसी ने किया हो Yes. कि तू नहीं, कर I दे, think, तू ही हाँ, हमारा काम ही कर दे. हाँ. And there's this idea of color revolution. The idea of color revolution is that you basically go to countries and you overthrow the government. And CIA, this is CIA's playbook. And the thing is, अगर होता है ना कि अपने कुत्ते को पालोगे दूसरों को अटैक करने, तो किसी दिन तुम्हें भी अटैक कर देगा वो. सो आई थिंक दैट्स ये ना व्हाट. ये इसका सबसे पॉपुलर लाइन जो एटलीस्ट इंडिया में मैंने सुनी थी बैक इन लाइक अ डेकेड अगो, वो हिलरी क्लिंटन केम टू इंडिया व्हेन शी वाज द फॉरेन सेक्रेटरी इन द ओबामा गवर्नमेंट, इफ यू रिमेम्बर. यस. उसने पाकिस्तान को यही बोला था यस. यस. कि अपने बैकयार्ड में आप सांप पालोगे यस. तो हाँ, आपको भी हाँ. डसेगा, समथिंग Yes, लाइक दैट. उसका yes, वो yes. So I स्टेटमेंट think हिंदी that में is तो what यही था. happened with CIA. That is what happened with CIA. CIA is known to overthrow governments in different countries, assassinations, color revolutions. जबकि वो दिखाते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आपके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बट एक्चुअली सब CIA उसको सपोर्ट कर रहा है विद everything. And जबकि दिखा रहा है कि ये तो ग्राउंड लेवल सपोर्ट है. So I think CIA turned around and उस सांप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को डस दिया. That's what माने, you can't have someone in surveillance for a year and then allow that person to kill the president. Like, come on. माने CIA But surveillance कर रहा what do है you तो. think about the Tulsi Gabbard trip to India, जिसमें वो I think she met Rajnath Singh, she met Yeah. कौन है डोवल, हाँ, she ठीक है met ना Doval. I डोवल. think she also met the माने मोदी जी से भी मिली वो. तो नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और देखो, the the fact is that India will do much better if it stops being non-aligned and it cooperates with America. That would be my uh, point of view. Ki stop this non-alignment bullshit. Russia and all are lost countries,
and China is the one that you need to protect yourself against. You share a border with China, and China is not, माने वो इंटरनली चाइना को जब भी प्रॉब्लम होती है, व्हाट इट डज इज कि वो एक्सटर्नली जाके एग्रेशन करता है, बिकॉज दैट gives the internal dissatisfied people something to talk about and something to be satisfied with. So I would say that it बट should. विक्स एक बात बता, चाइना ने कब एग्रेशन करी है? आई नो वी आर इंडियंस एंड वो हाँ इंडिया चाइना वॉर हुई थी एंड पीछे पिछले 5-6 साल में थोड़े बहुत बॉर्डर पे स्कर्मिशेस भी हुए हैं, हाँ बट ऑन अ ग्लोबल स्केल टेल मी चाइना ने कब वॉर करी है? मेरे हिसाब से अगर पिछले 500 साल देख लो, हाँ देर आर ओनली सम यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने हाँ कॉलोनियलिज्म किया, देन देर इज अमेरिका जो मतलब हम्म, जिसने वियतनाम और पता नहीं कहाँ कहाँ पे मतलब जो उनके हाँ आस वियतनाम, पड़ोस में भी नहीं है वहीं पर अफगानिस्तान, जाके मतलब किया। ईरान, सब जगह एग्जैक्टली ओवरथ्रो कि किया मतलब उन्होंने। आपका हाँ आपका मतलब क्या हाँ हाँ है ना? इट्स एग्जैक्टली, हाँ इट्स लाइक कि हाँ आप अगली गली पे जा रहे हो कि यार मतलब आप हाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो यार, तुम हाँ कौन हो? हाँ दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एग्जैक्टली, तुम कौन से हीरो हुई। सो हाँ सो अप सो टेल मी चाइना ने ये कब किया है? मेरे हिसाब से इंडिया ने कभी नहीं ये किया, चाइना हम्म ने कभी नहीं ये किया, हम्म रशिया ने कभी ये नहीं किया, मोस्ट हम्म ऑफ द साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन नेशंस ने कभी ये नहीं किया। हम्म ये सिर्फ सम यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने किया है, ये यूएस ने। एग्जैक्टली किसी एग्जैक्टली ने मैं। नहीं किया यार हाँ अपने अपने हाँ नेबरहुड में। ठीक है आपके, अच्छा मेरे बॉर्डर में, एंड हम्म टेल मी, सो आई डोंट हैव अ साइड हियर, बट अगर हम्म चाइना ताइवान वाला पंगा है, हम्म चाइना कोरिया का पंगा है, चाइना इंडिया का पंगा है, हम्म आई एम स्पीकिंग ऑन राइट नाउ, लेट सपोजिंग आई वाज चाइनीज, हम्म, देन आई वुड से यार ये तो सारे मेरी बॉर्डर कंट्रीज है ना, हाँ मेरा हाँ पंगा हो सकता है, ठीक है, मेरे अगले घर में कि यार मेरी बाउंड्री वॉल, मेरा उसका झगड़ा है, मेरा उसका झगड़ा है। अगर आप हाँ दूसरी गली के हो तो मैं अपना झगड़ा निपटा लूंगा, आप बीच हाँ। में नहीं आ सकते हो। नहीं नहीं, दैट्स द आप पॉइंट। एकदम एकदम सही बात कह रहे हो, तो अब हम बट चाइना कहाँ एकदम। पे कहीं और गया है? दैट्स माय नहीं, पॉइंट। ये इंडिया कहीं और गया है? कोई भी और कंट्री गई है? हाँ नहीं, इंडिया इंडिया और चाइना दूसरे देशों में नहीं गए हैं झगड़ा करने, बट इंडिया और चाइना के बीच में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत रीजन ऐसी है जो चाइना कहती है तो हमारी है। अरुणाचल प्रदेश भी हमारा हाँ, है, सिक्किम भी हमारा क्योंकि है। नेबरहुड में है। अब हाँ उसमें तो उसमें आज। मैं इंडियन हूं तो मुझे इंडिया की साइड मैं लूंगा, बट ऑल्सो कि चाइना की भी एक साइड है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इंडिया और चाइना के बीच का झगड़ा है, कोई हाँ, और इंडिया और इसमें बीच चाइना में के क्यों बीच का पड़े? झगड़ा है, बट और देखो भाई, ये ना बात तो सही है इंडिया कि ना तो चाइना कहीं पे वियतनाम में जा रहा है या रशिया में हाँ जा रहा है हाँ या कहीं पर जा रहा है जहां पे बोल रहा है कि यस। अब, या यूक्रेन में जा रहा है कि यार मेरा ये झगड़ा है। अरे तुम कौन हो? अरे भाई, मैं वो बात मान रहा हूँ मिगलानी, पर ये बात तो तुम मानोगे ना कि इंडिया अगर 10 पाउंड का है तो चाइना 50 पाउंड का है, 5 गुना ज्यादा पावरफुल है इंडिया से। शिप्स ज्यादा है, हाँ वो एयरक्राफ्ट तो ज्यादा है, ऑब्वियसली बम है, ज्यादा है। तो आज जब ऑब्वियसली है। इतना पावरफुल है तो इंडिया या को तो अलाइन करना पड़ेगा ना दूसरों के संग अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली अलाइन से ज्यादा, you know what I think once again I think the current government is playing it very well in हम्म balancing different powers, हम्म and in balancing doesn't mean only politically हम्म playing them against each other is not balancing. It is हम्म like कि मैं तुम्हारा भी दोस्त हूं, तुम्हारा भी दोस्त हूं। think about it this way, you have two friends, उनके बीच में झगड़ा हो हम्म गया। हम्म अब फ्रेंड वन सेज कि तुम मेरे को सपोर्ट कर रहा है, हम्म देन यू थिंक कि यार फ्रेंड, तू भी मेरा फ्रेंड है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो ऐसा क्या है? बट हम्म मे बी फ्रेंड वन ज्यादा पावरफुल है, देन विल यू हम्म सपोर्ट इट? विल यू सपोर्ट फ्रेंड टू? ये वाला जो है, ये वाला जो फ्रेंड वन फ्रेंड टू, यू कैन पुट एनी कंट्री इनटू पर्सपेक्टिव, आई नो विच कंट्रीज यू आर टॉकिंग टू अबाउट। अब ये वाला जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिया ने पिछले 3 साल में बहुत अच्छा बैलेंस किया है मेरे हिसाब से, हम्म और वो आज दिख रहा है, बिकॉज हम्म नाउ अब सडनली, अब फ्रेंड वन की गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फ्रेंड हम्म वन और फ्रेंड टू आपस में फ्रेंड हो गए, अगर हो हम्म रहे हैं, इट इज पॉसिबल कि आपस में हम्म फ्रेंड हो रहे हैं,
अब जो लोग हम्म, फ्रेंड वन की साइड पर थे वो फ्रेंड टू के अब दुश्मन तो हमेशा से रहेंगे, जो हम्म, फ्रेंड टू की साइड पे थे वो फ्रेंड वन के दुश्मन रहेंगे। लेकिन हम्म, जिन लोगों ने दोनों को बोला कि यार तुम दोनों दोस्त हो, तुम मेरे को झगड़े में मत घुसाओ अपने झगड़े में, हम्म, वो दोनों का दोस्त रहेगा ना। हम्म, So that is my point, that they have balanced it well, and because politics or wars are never long term. हम्म, What is long term is कि फालतू की दुश्मनी क्यों करनी जिसमें आपका पखेड़ा ही नहीं है। हम्म, हम्म। नहीं, तुम सही कह रहे हो कि जब रशिया और यूक्रेन में अगर वार हो गई तो इंडिया ने नहीं यूक्रेन को आउटराइट बोला कि नहीं तो मैं यूक्रेन का ही साथी हूँ, नहीं आउटराइट रशिया को बोला कि मैं रशिया का ही साथी हूँ। और उसने अमेरिका को भी अपने उसमें रखा कि भैया देखो ये तुम्हारी वार है, प्रॉक्सी वार है रशिया के साथ, मुझे क्यों घुसा रहे हो। उसने यूरोप को भी रखा कि भैया तुम तो तेल उनसे खरीद रहे हो, गैस खरीद रहे हो, मुझे क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो जब मैं ऑयल खरीद रहा हूँ रशिया से। सो इट प्लेड अ गुड रोल। बट एक ऐसा भी फ्यूचर है जबकि चाइना आके कहेगा अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और इंडिया में आज के दिन 1:5 की पावर डिफरेंशियल है इंडिया और चाइना में, और इंडिया अकेले नहीं हाँ, डिफेंड कर पाएगा। तो इंडिया आई को नो। वैसी दोस्ती रखनी है कि बाकी के मोहल्ले के लोग खड़े हैं बोले कि नहीं ये हम नहीं होने देंगे, दिस इज नॉट राइट। तो सो समटाइम्स आप इतने में नॉन अलाइन ना हो जाओ कि लोग बोले कि भैया तुम तो जब हमारा झगड़ा हुआ था तो तुम आए नहीं, अब तुम्हारा झगड़ा हुआ तो हम हाँ, क्यों आए, राइट। you're absolutely right. You're absolutely right that non-alignment is a very tricky thing, हम्म, because are you friends with both of the fighting parties, or do both of them see you as an enemy? यस। और बोथ ऑफ यू सी यू एज कि यार जब हमारे घर में आग लगी थी तो मैंने पानी हाँ, ने पानी से तुमने कुछ बुझाने किया ही नहीं आए नहीं। ना। अब तुम्हारे घर में आग लगी है तो हम क्यों आएंगे। Exactly. जी। But actually now that you mentioned that, इससे मेरे को याद आया, ये आई थिंक जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है, एस जयशंकर हाँ, said this, हाँ, जयशंकर, यस। and he said that कि एक उसको कोई तो, it was in a European context, and one of the European moderators in an interview asked him कि why are you not taking sides, why are you not supporting Europe, or Western Europe versus Russia, अब जब, and this was like 1 or 2 years ago, and उसने उसको exactly what you're saying मुंह पर दी, and he said that Europe has never supported me। हमारे रीजन में, एशिया में, वो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, हमारी पाकिस्तान के साथ झड़प रही है, तुमने तो नहीं कभी किया, यू सेड इट्स नॉट क्लोज टू अस, सो व्हाई शुड आई कम इनटू योर वॉर। उसने मतलब ऐसा, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना कि वापस सपाट थप्पड़ यस, लगाया। यस, आई लव्ड इट यस, बिकॉज, एंड दैट्स द थिंग, या, नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई हैव टू से दिस दैट दूसरे के झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। या, किसी का अपना झगड़ा हो रहा है, यू कैन शो देम लॉजिक, यू कैन शो देम रीजन, बट उनके झगड़े में क्यों पड़ो, क्योंकि कल को यार वो दोस्त हो जाए फिर तुम ही दुश्मन हो जाओगे। यस, यस। नहीं, आई थिंक इट्स टाइम कि इंडिया रियलाइजेस दैट इट नीड्स टू increase internal consumption. It needs to focus on its economy, and it needs to know that the only territorial integrity problems it faces are from Pakistan on the left and China on the right. And the only long term way of defeating these territorial interruptions it might face is having a very strong economy. And the way to have this strong economy is to stop people like Meglani and Vikas from leaving India and then succeeding outside India. Indian government, our culture has to look very deep inside that what is it that makes people like us succeed once we leave India. अगर वो कोर इश्यूज को आप सॉल्व करोगे तभी आपको, तब चाइना सोचेगा कि भैया और किसके साथ जाके दोस्ती करूं, इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। But the fact of the matter is both of us succeeded once we left India, and there's something to be said why that happened. Well said, well said. Weeks, what are you doing on the weekend? We are on the end of Yeah, a Friday. yeah.
वीकेंड आई हैव माय डॉटर विथ मी। एक फोटो एक वीडियो दिखाता हूँ सबको चैनल को। हाँ, तो मैं अपनी डॉटर को गुड्डी उड़ानी सिखा रहा हूँ। तो मैं मेरी वाइफ के संग गया था उसको काइट उड़ाने सिखाने। So also two videos. The first one is where she still doesn't know how to fly a kite, and the second one is after I spent 10 minutes teaching her. When I count till three, okay? One, two, three. तो ये भाग रही है, बस मैंने गुड्डी छोड़ दी और वो अब उसको लेके भाग रही है इधर उधर। सो शी डिडंट नो एनी बेटर। और ये सेकंड वीडियो है जहाँ मैंने उसको सिखाया कि देखो पापा कलकत्ते में ऐसे गुड्डी उड़ाते थे। तो अब उसकी हैंड मूवमेंट देखो, जैसे वो स्ट्रिंग को कब टान रही है, कब रिलीज कर रही है वगैरह। So release some string so it can go higher up. That's it. Very nice. So I felt very proud of that. Very nice. पतंग उड़ानी सिखा दी, मतलब फिर तो ठीक है। पेचे लड़ाने कब सिखाएगा? यार पेचे लगाने भी सिखाऊंगा, पर अमेरिकन पेचे नहीं लड़ाते। अगर आपने अमेरिकन को गुड्डी उड़ाते देखा है, वो पता नहीं वो ऑफेंड हो जाएंगे पेच लगाने से। बट but I think I will reiterate this. Look, both of us are in our late 40s, and I hope India doesn't do to this new generation what it did to us. We love India. आज भी सुबह उठ के मैंने कॉफी के संग तेरी बेटी के संग बात करते करते मैं कॉफी पी रहा था और समोसे खा रहा था। अपनी बेटी को मैं लास्ट वीक गुड्डी उड़ाने सिखाने लेके गया। तो but you know, we won the sperm lottery, right? We ended up having high IQs, and both of us, like you had to escape to London to do your business school education and then stay back in London. I had to escape to Silicon Valley, and that is what Indian government needs to focus to solve. नहीं तो हर समय छोटी बिल्ली बने रहोगे और बड़ी बिल्ली और कोई रहेगा तुम्हारे अगल बगल। या मुझे तो ऐसे लगता है that kind of a thing is solved. So MIGs of today will not come to London, in my I don't think opinion. that's solved. If I'm talking hypothetically, is that if me of today in 2025, not in 2005, I would just remain there. I think that part is solved. That part is solved. And see, people will still come. People will still come. That's a natural immigration. Maybe the differential between London and India has reduced, but the differential between Silicon Valley and India, I think, has widened. I don't think a Vikas of 2025, he will do much better if he moves to Silicon Valley than stay back in India. You would be surprised. Silicon Valley has nothing to do with country. It is just to do with the ecosystem. And ecosystem can be in any country. But we will. I think we should discuss the ecosystem part on our Wednesday shows. For people who have not seen, we've recently started a weekly Wednesday show at this time, every week, 9 p.m. India time, and maybe it will be 8 p.m. soon, once our times change. But it's all about AI. And why am I saying Silicon Valley is the same as AI? Because AI is the same as Silicon Valley. Because everything in the world, sooner or later, will transform into AI. And if you want to catch up, I think you should catch that show, because we are also catching up. And Vix and I, we spend half our week thinking about how to best leverage AI to help our business, to help our investments, to help our daily life. And maybe we want to share, maybe you will get something what we will share in there. So join us on that. Vix, मैं एक चीज बोलूं, मेरा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, कल तो IPL शुरू हो रहा है, and there'll be the KKR RCB match. बट संडे को सिकंदर का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. you know, like they say, Salman Khan fan since 1989, that kind of a thing. So मेरा excitement वहां पर भी है. So maybe I'll share this in our next episode. But at some point, I think this movie is going to create havoc at the box office. At the box office, as well as, do you know this? Who's the director of the movie? I don't know. Batao. It's a guy who has done previously South Indian movies, Tamil movies, and all that.
called A.R. Murugadoss. Okay. Now the thing is, if you have not heard this, he is the guy who created the first, वो जो हिंदी सिनेमा में बोलते हैं ना बॉलीवुड में, 100 crore मूवी. Okay. 100 crore मूवी कहाँ से आई? What? Which was the first 100 crore movie ever in Bollywood? अरे भाई, It was बता दो Ghajini. बताओ। अच्छा। आमिर खान की Ghajini was the अच्छा। first 100 crore movie ever in Bollywood. हम्म And वो उसका डायरेक्टर कौन था? मुर्गादास. हम्म हम्म अब हम्म मुर्गादास बोल रहा है, ये 2009 था. 2009 में फर्स्ट 100 crore मूवी एवर इन बॉलीवुड in हाँ real money. हाँ I'm not talking about हम्म in like PPP and all that हम्म extrapolations. उसके बाद मुर्गादास ने बोला, not today, not because he is directing Salman Khan and Sikandar. This is their first movie together. But हम्म उसने गजनी के टाइम पर भी बोला था अलग-अलग इंटरव्यूज में हाँ कि सर मैंने तो सलमान खान को बोला था कि मूवी कर ले, सलमान खान ने मना कर दिया, फिर मैं हीरो ढूंढ रहा था, फिर उसके हाँ बाद आमिर खान ने कर दिया. हाँ और आमिर खान ने भी ये बोला था कि हाँ मतलब ठीक है, सी हाँ सी दे बोथ हम्बल पीपल, राइट, कि ऐसा हम्म नहीं है, ठीक है, उसने मना कर दिया, मैंने ले लिया, मैंने हम्म कर दिया. अब सलमान खान ने हम्म मना कर दिया था, बाजीगर सलमान खान को मिली थी, हम्म अगर उसने ले ली होती हम्म, तो शाहरुख खान का कभी पत्ता ही नहीं उड़ता, ठीक हाँ है ना. बट हाँ वो जिसको बोलते हैं जिसकी किस्मत वहीं पर होती है, हाँ कि जिसने जो या लिया उसने उसको या उठाया. या एवरीथिंग एल्स इज हाइपोथेटिकल. सो या बाजीगर शाहरुख खान ने करी, गजनी आमिर खान ने करी, और मुर्गा दोस्त हम्म, फाइनली, और जिसको बोलते हैं इट कम्स अ फुल सर्कल, ही इज नाउ हाँ, डूइंग अ मूवी विद सलमान खान कॉल्ड सिकंदर, व्हिच इज हम्म, कमिंग, आई थिंक इट्स कमिंग इन 2 weeks. बट उसका ट्रेलर ट्रेलर के लिए मैं 2 हफ्ते से वेट कर रहा हूँ यार. मूवी अच्छा। आने वाली है और ट्रेलर ही नहीं आया. हम्म 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 नहीं चलो, संडे को आ बेस्ट ऑफ लक विद दैट एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. अब टुमारो वी आर डूइंग अ फुल पॉडकास्ट. कल मिलते हैं इलानी. कल मिलते हैं. एंड वी विल जस्ट फॉर पीपल, वी आर सीजन 2 is starting next week. So परफेक्ट. if you've not pressed the bell button, press it now. On ओके. that note, see you and see you next Friday. But if you want to see our AI, then see you next Wednesday. Ciao ओके. now. अच्छा, बाय.